So I am starting with today's discussion. So I have purposefully started with this slide so that you have the global picture that in Navier-Stokes equation you have all these four forces that should be accounted for any differentially small control volume. That is pressure force, body force, normal viscous force, and shear viscous force. So as a recapitulation, what do you think in Euler equation, which of these were missing? Quickly, just in a minute. Viscous forces. Viscous forces. So you were only having which? Two? Pressure forces and body forces. Pressure forces and body forces. So this was the purview of Euler equation. When you add these two, you end up in Navier-Stokes equation or Cauchy-Navier equation. So we understood that the Euler equation terms had all the measurable quantities, that is pressure and body force terms. But in case of viscous forces, we wanted to convert forces to stresses, then stresses to derivatives of velocities. And we were actually doing the same stuff. So these were normal viscous stresses. So these are the normal viscous forces because we are multiplying area also with all of them. And likewise, you had shear viscous forces on all the surfaces. So in the limit, as this differential control volume tends to 0, you are able to find out the force or stresses at that point or the point in question. Any doubts to anyone? So these were the Cauchy-Navier equations in X, Y, and Z directions. So you are able to see these two terms were already there in what? The Euler equation. The only term which has come up in the derivation of Cauchy-Navier equation is this term. So these terms in X, Y, and Z direction, they are in addition to what were those in Euler equation. So what I have marked in violet, these are the additional terms which you get in Cauchy-Navier equation in addition to these orange terms which were already there in Euler equation. Is that clear? Yes, sir. So applying Reynolds transport theorem, I could actually, this is the Reynolds transport theorem in X, Y, and Z direction. You are able to see Reynolds transport theorem in X, Y, and Z direction. I am simply substituting Fsx, Fbx as integral of these terms. And I finally get this as the answer. So these are the final Cauchy-Navier equations. And these are called scalar equations because you are representing each component separately. If you want to write down a single equation, then this is the equation in vector form. So I'm giving you 30 seconds. If you have any doubts in this, please come up with your doubts. I will be a little bit faster from now onwards because we are only left with few lectures now. So we need to complete the syllabus also, but I will not rush through, but I will be a little bit faster than the previous lectures. So any doubts to anyone? No, sir, not yet. Okay, so these are the scalar equations and this is the vector equation. So I multiplied with I, J, and K, nothing more than that, and combine these three. Now, what do you think is the purpose? Next purpose should be what? Converting these into what? Derivative of velocity. Derivatives of velocity or strain rates. And we understood that whenever the fluid element in a fluid flow
is there, it can actually have translation, it could have actually rotation, it could have undergone linear deformation, and it could also have gone Angular deformation. angular deformation. And one thing more, it may have gone, I should put here E also, it may have gone volume change. Yes, sir. So out of all of these, which are the consequences of stresses, or which will actually cause Sir, stresses? C, D, and E. So C, D, and E. So you will not get stresses due to translation and rotation. You will get no stresses due to these two, but you will get stresses due to these three. That is linear deformation, angular deformation, and Volume change. volumetric strain, or you can say change in volume. So we discussed the other day, if you remember, the strain in linear direction, if it is Exx dot, this was equal to what? Curly U by curly X. Likewise, E dot YY was curly V by curly Y. E dot ZZ was curly W by curly Z. And we could represent this as this also. This is just a mathematical manipulation, nothing more than that. I am just writing for completeness here. This was half curly W by curly, I should have written down here, curly W by curly Z plus curly W by curly Z, and here also curly Y, and this is also V. So this was about linear deformation. Any doubts till this point? No, sir. Now I'm coming to the angular deformation part. So in the angular deformation part, originally the angle between any two adjacent side was 90 degree. If I presume it to be a square element, after the deformation, so this was the original element which you are seeing here. After deformation, the element becomes somewhat like this. So this is the fate of the element after it has undergone angular deformation. So if I represent A, B, C, D as the original element, then I have A, B dash, C dash, D dash as the deformed element. Now please remember, as far as angular deformation is concerned, I define angular deformation as change in the angle between two adjacent sides. So originally it was 90 degree. Now what is the angle between the adjacent sides? If this is alpha, this is beta, what is now the new angle? 90 minus alpha plus beta. 90 minus alpha plus beta is the new angle. So what is the change in angle? 90 minus Alpha plus beta. Is that clear? So this is alpha Yes, plus sir. beta. This is the change in angle which has happened. So now the entire thing in this is I need to find out what is alpha and what is beta. So how can you find out alpha and beta? I'm drawing So here tan alpha 1 और tan beta निकालेंगे. tangent alpha and tangent beta you will calculate. So this was the deformed part and this was the original part. So I'm marking this as A, B, C, D, and this is A, B dash, C dash, D dash. So I will presume that there is no linear deformation, because otherwise I will not be able to define it. So please remember, when I am defining a particular kind of deformation, when I was defining linear deformation, although the fluid element will undergo all the processes simultaneously, but I could actually treat
them individually and then simply add the effects together. So in this case also, I am simply taking the effect of angular deformation, although the fluid element will be under the action of all these processes, A to F, A to E, sorry. So what do you think this angle will be? This is, say, alpha. So you know that tangent alpha should be what? B dash B by AB. This should be this upon this thing. Yes, sir. Yes, sir. So what is this? What is this? What will be this equal to? Hanji, what will be this equal to? Anyone? If A is moving with u velocity, what will be? Now let me know if A and B had similar velocities in vertical direction. So this was A, this was B. If velocity at A was V in vertical direction, velocity at B was also V, then would this deformation take place or not? No, sir. No. No, if instead of being here, it has moved up, what does that tell you? That if V is here, what should be velocity at B in vertical direction? It should be different from V. So it Yes, should sir. be V plus curly V by curly X into dx. Yes, sir. Any doubts to anyone? So the difference between the level of A and B will be due to difference in velocities at point A and B. So what is the difference in velocity? Curly V by curly X into dx. This is the change in velocity which has actually caused B to reach this location instead of being horizontal. Is that clear? Any doubts? So this distance, this vertical distance will be equal to what? Speed into, what should I write down? Time. You know that distance moved should be equal to speed into time. So this is the speed, this is difference in speed, and this is the time elapsed. So you have this distance, that is this vertical distance, सर written ये down as डी it, वी बाय डेल वी बाय डेल वाई नहीं होना चाहिए del v by del y होना चाहिए. सर क्योंकि वो वर्टिकली अपवर्ड है ना. वर्टिकली अपवर्ड. आप मुझे और बताओ, सही, दिस वाज द ओरिजिनल ए बी से, मान लीजिए इसके ऊपर यहां पे ए पे वेलोसिटी v है और बी पे वेलोसिटी v है, ठीक है, और ए पे मान लीजिए वेलोसिटी u है x डायरेक्शन में और v पे वेलोसिटी है u, मान लीजिए एग्जांपल मैं बोल रहा हूं. तो क्या इसकी लीनियर डिफॉर्मेशन होगी कि नहीं होगी ए बी एलिमेंट की? लीनियर तो लीनियर भी नहीं होगी, नहीं हो सकती. लीनियर भी नहीं होगी. नहीं होगी सर. और क्या एंगुलर होगी? एंगुलर भी नहीं सर होगी. एंगुलर भी नहीं होगी. ठीक है. लीनियर कब होगी? अगर ए की वेलोसिटी यहाँ पे u है और यहाँ पे कितनी है? ज्यादा होना चाहिए. u प्लस डेल ज्यादा है, तब तो होगी लीनियर. और एंगुलर कब होगी? एंगुलर का क्या मतलब है? b शुड बी नॉट हेयर बट समवेयर हेयर. यस सर. सो व्हाट कैन पुट b एट दिस लोकेशन? व्हिच वेलोसिटी कंपोनेंट? v. So v should vary in which direction? Say there was a point C. C has reached this location. There was another point D. D has reached this location. यस सर. So this difference in movement is due to what? As v is varying in which direction? वर्टिकल. X direction. X direction. X direction. X direction. Is that clear?
So this distance, this vertical distance is equal to what? Curly v by curly x into dx into dt. This vertical distance. And if there is no linear deformation, then this horizontal distance will remain what? Dx. So tangent alpha becomes equal to what? Curly v upon curly x into dt. Is that clear? सर ये x कैसे आ रहा है ये समझ नहीं आ रहा, करली v बाय करली x क्यों आ रहा है, करली v बाय करली y आना चाहिए। नहीं, मैं वही पूछ रहा हूं आपको कि अगर तो देखो, आप सिंपल मुझे बताओ, अगर इसकी y डायरेक्शन में आपको लीनियर डिफॉर्मेशन लेनी होती, मान लो ये आपके पास फ्लूइड एलिमेंट है, ये मैं यहाँ पे a लिख देता हूँ, यहाँ b लिख देता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ c, और ये हो गया d। ठीक है, अगर इसकी आपको लीनियर डिफॉर्मेशन y डायरेक्शन में चाहिए तो क्या होना चाहिए? a की जो वेलोसिटी हो, a की वेलोसिटी अगर v है और d की वेलोसिटी क्या है? v प्लस curly v by y into dy. This is dy. Then what will happen? AD will actually come to this location. So there will be linear deformation in y direction. हाँ जी, ये क्लियर है आपको? यस सर, क्लियर है? यस सर। अगर B पॉइंट, A को यहीं पे रहना है और B को मान लो यहां पहुंच जाना है, से दिस इज B डैश। इसका मतलब क्या हुआ? अगर A की वेलोसिटी V है तो B की वेलोसिटी y डायरेक्शन में क्या होनी चाहिए? इससे डिफरेंट होनी चाहिए। यस सर। ठीक है, तो वेलोसिटी V किस डायरेक्शन में वेरी कर रही है? अगर यहां पे कोई मान लो पॉइंट होता है E, यहां पे कोई पॉइंट होता है F, तो E की वेलोसिटी A से डिफरेंट होती कि सेम होती? डिफरेंट होती है। डिफरेंट होती। मान लो ये डिस्टेंस था dx1, ये डिस्टेंस था dx2 और ये डिस्टेंस है dx, तो E की वेलोसिटी क्या होती? v प्लस करली v बाय करली x इंटू dx1। F की वेलोसिटी क्या होती? v प्लस करली v बाय करली x इंटू dx2। और B की वेलोसिटी क्या होती? v प्लस करली v बाय करली x इंटू dx। ये क्लियर है? यस सर, यस सर। Now you got it why it is curly v by curly x, not curly v by curly y. यस सर, यस सर। ठीक है, तो ये डिस्टेंस जो है b डैश b, ये कितना आ गया हमारे पास? करली v बाय करली x इंटू dx इंटू dt. दिस इज द डिस्टेंस bb dash. Is that clear? Now what is this angle? This is alpha. So tangent alpha is equal to what? B dash b BB dash upon AB। AB. Now if deformation is small, this is also equal to alpha. So BB dash is what? Curly v by curly x into dx into dt upon what is AB? Dx. So this dx gets cancelled out. So I get alpha as curly v by curly x into dt. So this is the angle. We are interested in rate of change of angle. So alpha dot will be equal to what? करली v बाय करली x। Curly v by curly x. Is that clear? Likewise, for beta angle, this angle, what will be this? This is say d dash. What will be this length equal to? dd dash. What will be dd dash equal to? If A and D were moving with same horizontal velocity u, will there be any angular deformation of AD line? नो सर। So what does that tell you?
if this is u, this should be u plus, what should I write down? Del u by del y. Curly u by curly y into Dy. Is that clear? Is that clear? Any doubts? And clear hai? Yes, sir, all clear, sir. So what I am getting is, it is half, what should I write down? Curly u by curly y plus curly v by curly x. This is the rate of change of angle which was originally 90 degrees. Half सर curly ये u by एप्सिलॉन curly एक्स वाई है y. ना हाँ जी बताइए. सर ये एप्सिलॉन एक्स वाई है ना हाँ, this is epsilon xy. So this is equal to half curly v by curly x plus curly u by curly y. Likewise, I can have in yz and zx directions. So E dot yz is equal to half curly, what should I write down here? Help me write down, complete this. Likewise, zx also. What should be here? What should I write down here? Follow the cyclic order. Curly. It is xy, so it was xy, so here it should be YZ. yz. And you have opposite velocities here, so what should be here? Omega. Omega. V. V. What about here? Z and x. Here should be u and here should be W. w. Is that clear? Any doubts to anyone? Is that clear? And Yes, you will sir. get to know. Yes, sir. हाँ जी बताइए, एक मिनट. हाँ जी बताइए. Any doubts? No, sir. So you will get to know why I have put an additional half here after some time, because I know that if I have angle, that is alpha dot plus beta dot, this is what alpha dot beta dot क्या आ रहा था actual में? Anyone? If you remember. Sir, alpha dot del v by curly v by curly x. So I Rate of got change of angle. pi by 2 minus alpha dot beta dot. So I got alpha dot plus beta dot. So this alpha dot plus beta dot is also represented by gamma xy. So this is gamma xy is curly v by curly x plus curly u by curly y. So, but I am not writing down gamma xy, but I am writing down exy, which is half of gamma. So we will get to know why we have to add this half additionally. As of now, it is not clear to you, but it will become clear as we go along. So this is what you need to understand. So I am summarizing here. In case of angular deformation, I have three things. And in case of linear deformation also, I have three things. So in case of linear deformation, I can write down this as Exx, Eyy dot, Ez dot. And in case of angular deformation, I have Exy dot, Eyz dot, and Ezx dot. And also you will see that this is equal to what? E dot yx, E dot zy, E dot xz. You'll get to know why. So this is linear deformation and this is angular deformation. Any doubts to anyone? Now try to see here. This is very important. We have identified that stresses are related to strain rates. Stresses are related to strain rates and they are directly proportional in case of what?
Newtonian fluids. So I'm writing down stresses proportional to strain rates, and when I remove the proportionality constant, I have to replace this with a matrix. And you know that how many terms are there? 9 into 1. Here also 9 into 1. So this coefficient matrix should be of what? 9 into 9. 9 into 9. So you have how many independent constant that you require? 81. So you require 81 independent constants to actually specify stress in terms of strain rates in case of anisotropic Newtonian fluid. So how many equations will you get from here? How many 9 equations? 9. 9 equations. How many unknowns? 81 unknowns. 81. Can you find this? Can you solve this equation? No, sir. No. So what we need to do is we need to convert it into a more solvable type equation. So what we know is from complementary shear stress property, this sigma xy is equal to sigma yx, sigma yz is equal to sigma zy, and sigma zx is equal to sigma xz. So whatever is highlighted in yellow can be done away with. So how many now independent constant do you require? On the left hand side you have 6 into 1 matrix, others are dependent. Here also 6 into 1. What should be here? 6 6 into into 6. 6. So how many independent constant do you require now? 36. How many equations you have? 6. 6 equations, 36 unknowns. Still it is unsolvable. Yes, sir. So what else could we do? Think about it. What else could we do? In the previous one, what did we do? How जो did we आपने eliminate ये other ये 3? Other 3. Okay. So what वो we जो did आपने नीचे is we know सर जो that आपने ये sigma xy is equal to sigma yx. Yes, sir. So it means these are dependent now. Yes, sir. To each other. So how many independent now I have? I have 6. 36 independent. So these are dependent on Yes. these only. Yes, sir. So that is why तो I जो now आपने I'm left with 36 सर independent constant which I need to find out. हेलो सर हाँ जी. सर जो आपने ये पोर्शन मार्क कर रखा है हाँ ये मतलब इसका क्या मीनिंग है मतलब कि ये हम काउंट नहीं कर रहे हैं मतलब हाँ, ये देखो आप ये सोचो कि अगर ये 3 यहां से ये लेफ्ट साइड है जो ये 3 तो रिपीटिंग है, हाँ ऊपर से ठीक है बराबर हो तो जाएंगे 3 रो खत्म हो गए. हाँ ठीक है तो यहाँ पे कितने हो जाएगा? 6 बाय 6 का मैट्रिक्स रह जाएगा. अच्छा ठीक है सर आप समझ गए ना? ठीक है पहले ठीक है 9 ठीक है बाय 9 का था, अब 6 बाय 6 का हो जाएगा अब 6 बाय 6 का रह जाएगा. हम्म। और ये क्या है अगर आपको याद हो? These are what are we analyzing? These are viscous stresses. अगर आपको याद हो हमने क्या लिखा था? टॉ को क्या लिखा था? पीटी और सिग्मा की टर्म्स में. Yes, sir. So we are analyzing what? Viscous stress. Viscous stresses. So ये जो सब कुछ कर रहे हो आप सिर्फ viscous stresses को टैकल करने के लिए कर रहे हो और कुछ भी नहीं. Global view should also be in your mind. Otherwise Euler equation was sufficient. Now I am now playing a trick. What is this trick? Now how many equations do you have? 3. 3. How many unknowns? 9. 9. What I have done? I have written down the same thing in terms of what? Principal stresses. And what do you know in principal stresses? Shear stresses are shear stresses are 0. 0. So I will only have 3 into 1 here, 3 into 1 here. So this will be 3 into 3. So initially I had 81 constants. That was the anisotropic case.
Then I came to 36 constant. In 81 constants, I had how many equations? 9 equations. In 36, I had 6 equations. Now I have 9 constants and how many equations? 3 equations. So what I have been able to do in this process, I could not actually make the number of equations equal to number of unknowns, but what could I do? Reduce them. Reduce the number. That is what I could do. Is that clear? Yes, sir. So now comes the first assumption, that is, I will treat now an isotropic case. Now in case of isotropic, what do you know? What do you know in case of isotropic? If I ask you, say, I have this block and I pull this in, say this is x direction. What will happen in y and z directions? Anyone? सर y और z में कोई चेंज नहीं आ रहा अगर हम x y और में z अगर में इसको क्या पुल होगा? कर रहे हैं अगर x डायरेक्शन में क्या होगी? इलॉन्गेशन. y z डायरेक्शन में क्या होगा? कुछ भी नहीं. अनचेंज्ड होगा सर. क्या होगा? There will be reduction in length. Deduction. Is that clear? Yes, sir. So now let me know, the reduction in length in y and z direction will be same or different in case of isotropic? In case of isotropic तो same ही होना चाहिए sir. Same होगा. Material composition same है तो same होना चाहिए. Is that clear? So now if I pull in y direction, then also reduction in x and y direction should be same. X and z direction, sorry. Yes, sir. Is that clear? So there is no peculiar x, y, and z direction. Whichever I choose, in the other two directions, there will be equal reduction in length. And whichever I choose for elongation, elongation will also be same. That is, if I pull in x direction. एक्सक्यूज मी सर. हाँ जी. सर हमने ये जो आपने केस बताया जिसमें आपने बोला था कि इस एलिमेंट को हम x डायरेक्शन में पुल कर रहे हैं तो इसमें ये भी अज्यूम किया हुआ है कि शियर स्ट्रेसेस भी साथ में लग रहे हैं. हाँ, शियर स्ट्रेसेस भी साथ में लग रहे हैं, लेकिन इसमें जब हमने नॉर्मल कर दिया तो सिर्फ नॉर्मल है, इसमें सिर्फ नॉर्मल है इस केस में. सर नॉर्मल है तो फिर हमें ये कैसे पता लग रहा है कि y और z में भी रिडक्शन हो रही है लेंथ में, क्योंकि हम तो सिर्फ x में ही पुल कर रहे हैं उसको. चलो अब ऐसे सोच के बताओ, अगर आपके पास आप एक ब्लॉक को ऐसे खींच रहे हो तो इसका क्या होगा बाकी साइड्स का? So if you are pulling this in this direction, what will happen to this width? सर विड्थ तो सेम ही रहेगी. This width will not decrease. नो सर. क्यों? With decrease. अगर आप इसको पुल कर रहे हो ये ऐसे हो जाएगा ना. आप सर पुल बट वो ऊपर वाले फोर्सेस पे भी डिपेंड करेगा ना कि हम ऊपर उसके ऊपर की तरफ कोई फोर्स लगा रहे हैं. किसके ऊपर की तरफ? मतलब इसी एलिमेंट के ऊपर अगर हम फोर्स लगा रहे हैं ऊपर वाले फेस पे तो ही तो वो लेंथ रिड्यूस होगी ना उसकी, मतलब विड्थ रिड्यूस कर पाएंगे. तो आप बताओ, आप कोई भी एक कंपोनेंट लेते हो, अगर एक कंपोनेंट है आपके पास, आप उसको इस डायरेक्शन में अगर पुल करते हो तो इस डायरेक्शन में तो एलोंगेट हो जाता है, लेकिन और परपेंडिकुलर डायरेक्शन में क्या होता है उसका? जैसे आप शीट, आप किसी शीट को, आप शीट जब बनाते हो क्या करते हो? हाउ डू यू मेक शीट और मेटल शीट या वायर कैसे बनाते हो आप? यू पुल इट इन वन डायरेक्शन, so it elongates in one direction and it reduces in other directions. हाँ जी, आप समझ रहे हैं? यस. हाँ जी, एनी डाउट्स प्लीज आस्क मी. आपको समझ आया ये मैं क्या कह रहा हूं? अगर आप किसी चीज को पुल करते हैं, चलो ऐसे एग्जांपल बताओ, अगर आप इस कंपोनेंट को एक्स डायरेक्शन में पुश कर रहे हो तो क्या होगा?
सर ये कंप्रेस हो जाएगा, कंप्रेस हो जाएगा, तो जो ये थोड़ा लेंथ सा है ये ऊपर क्या होगी, उठने ये की कोशिश रिड्यूस करो। होगी, यस सर, और ये लेंथ क्या होगी, थोड़ा सा ऊपर उठने की कोशिश होगा। तो बड़ा हो जाएगी ये वाली लेंथ। यस सर, और इस डायरेक्शन में लेंथ को क्या होगा, ये भी बढ़ जाएगी। यस सर, तो एक डायरेक्शन में अगर आप पुल करते हो तो बाकी डायरेक्शन में क्या होगा, रिडक्शन होगी। अगर एक डायरेक्शन में पुश करते हो तो बाकी डायरेक्शन में इलोंगेशन होगी। इज दैट क्लियर? यस सर, समझ गया। क्लियर है? यस So सर, now I am coming to the isotropic part. How can I write down this equation as sigma 11 will be equal to what? Sigma 11 should be equal to what? C11 epsilon 11 dot plus C12 epsilon 22 dot plus C13 epsilon dot 33. Likewise, I can have for sigma 22 and sigma 33. Now, what do you think? Which constants should be equal? Which constant should be equal? Which constant should be equal? C12, C13 C12 and C13 should be equal. equal. So these are equal in first Why? equation. Which क्यों two सर? should be equal in second equation? सर C23. हाँ जी बताइए। सर ये इक्वल कैसे आया? इक्वल जैसे आपने पॉइजन रेशियो पढ़ी है अभी? यस सर, बढ़िया। पॉइजन रेशियो में क्या करते थे आप, अगर आपको याद हो, आप ऐसे कुछ करते थे, मुझे जितना कि याद है, सिग्मा एक्स अपॉन ई माइनस न्यू सिग्मा वाई अपॉन ई प्लस सिग्मा जेड अपॉन ई, याद है ये? यस सर, तो ये न्यू क्या होता था? पॉइजन रेशियो। पॉइजन रेशियो ये क्या दिखाता है कि कितने रेट से स्ट्रेन होगा, और ये माइनस साइन क्या बताता है कि अगर ये पॉजिटिव है तो बाकी जगह ये कंप्रेसिव होगा। तो ये न्यू आप सबके दोनों के कॉमन क्यों लेते थे, क्योंकि आप आइसोट्रॉपिक मान रहे हो इसको। यस सर, तो बेसिकली ये जो C1 to C13 है, ये क्या किस तरह के बराबर है, मान लो न्यू 1 के बराबर है। ये क्लियर है? यस सर, अब क्लियर है आपको? यस सर, हाँ जी क्लियर है ये। Likewise in third equation, which two will be equal? C31 and C32। हाँ जी क्लियर है? एनी डाउट्स? तो अगर C12 C13 मान लो कुछ बराबर है, मान लो यहां पे मैं लिख देता हूं से आई राइट डाउन दिस एज से A एंड C21 एंड C23 बराबर है B, और C31 इज इक्वल टू C32 इज इक्वल टू C, तो क्या A इक्वल टू B इक्वल टू C भी है कि नहीं? हाँ जी। नहीं सर, नहीं है। वाई? A equal to B equal to C. सर वो कैसे हो सकते हैं, वो तो डिपेंड। चलो आप मुझे बात बताओ, अगर आपने सॉलिड स्ट्रक्चर पढ़ा है, आप कुछ ऐसे करते थे, आप एक तो ये करते थे, अगर आपको आइसोट्रोपिक मटेरियल के लिए सेम हो सकता है, आइसोट्रोपिक के लिए तो हम कर रहे हैं। ये सर आइसोट्रोपिक के लिए सेम। आइसोट्रोपिक में अब ये करते थे ना, देखो आपको याद होगा, आप न्यू सब सेम लेते थे, याद है आपको? यस सर, बिल्कुल। सो इट मींस A इज इक्वल टू B इज इक्वल टू C। जी सर। इज दैट क्लियर? यस सर। So now I'm again writing down. Please be careful now. What I have done is I have written down, this is essentially what? C11, this is C12 and this is C13. These two are equal. C12 is equal to C13. And what I have done is I am putting it here. Please be careful now. Wait for a second. So this is sigma 11 is equal to C11 epsilon 11 dot plus C12 epsilon 22 dot plus C13 epsilon 33 dot.
and I know that C12 is equal to C13 is equal to say A. So what do I get? Sigma 11 is equal to, and say C11 is say B. So this equals B epsilon 11 dot plus A epsilon 22 dot plus epsilon 33 dot. यहां तक क्लियर है सबको? Any doubts to anyone in this equation? I put this equal to single constant and this equal to another constant. Is this clear? Any doubts? So just a mathematical manipulation now. I am adding and subtracting A E11 dot. I am adding as well as subtracting. This is just a mathematical manipulation to convert this into a more convenient expression. So when I add and subtract this, what do I get? Excuse me, sir. हाँ जी बताइए. सर C12 और C13 को इक्वल कैसे किया ये बता दो एक बार. C12 और C13 को इक्वल कैसे किया? मैं ये आपको बोल रहा हूं, जब आपने सॉलिड स्ट्रक्चर में पढ़ा होगा, एक आप पॉइजन रेशियो बोलते थे. यस सर. वो क्या थी? लेटरल स्ट्रेन होती थी वो. यस सर. और एक क्या होती थी? लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन. यस सर. शायद सिग्मा अपॉन ई होती थी. ये क्लियर है आपका? यस सर. तो जब आप एक चीज को एक डायरेक्शन में पुल करते हो तो बाकी टू डायरेक्शन में क्या होता है? डिक्रीज होती है. डिक्रीज होता है. वो किस रेट से डिक्रीज होता है? आप उसको पॉइजन रेशियो से करते थे. यस सर. अब पॉइजन रेशियो आप y और z डायरेक्शन में सेम ही लेते थे, डिफरेंट तो नहीं लेते थे? नो सर. उसका मतलब क्या हुआ? कि वो इंडिपेंडेंट ऑफ डायरेक्शन है. आइसोट्रॉपिक का यही मतलब होता है ना. आइसोट्रॉपिक का मतलब क्या होता है? कि कोई डायरेक्शन कोई भी चुन लो, द आंसर विल नॉट चेंज. फॉर इंस्टेंस, आपने बैम्बू देखा है? यस. बैम्बू को अगर आपने तोड़ना हो, ये बैम्बू की एक बैम्बू पड़ा है, अगर आप इसको इस डायरेक्शन में तोड़ो, ट्रांसवर्स में और लॉन्गिट्यूडनल में, क्या डिफरेंट फोर्स लगेगी, सेम फोर्स लगेगी? डिफरेंट लगेगी. अगर आपने बैम्बू को तोड़ना, आप किस डायरेक्शन में तोड़ोगे? एल डैश से तोड़ोगे कि टी डैश से तोड़ोगे? सोच के बताओ. टी डैश. आपने देखा है, सीढ़ी देखी है? पौड़ी में जो बैम्बू लगा होता है, बैम्बू किस डायरेक्शन में इजीली टूट सकता है? लॉन्गिट्यूडनल में कि ट्रांसवर्स में? ट्रांसवर्स. You go back and then you will get to know it is in longitudinal direction. Longitudinal. यस सर. वो फोर्स लगाते हैं तो टूट जाता है. हाँ, लॉन्गिट्यूडनल में टूटता है. तो ये आइसोट्रॉपिक नहीं है. दिस इज अनआइसोट्रॉपिक केस. मान लो लेकिन आपके पास कोई मटेरियल होता है ऐसे कि चाहे आप उसको ऐसे तोड़ो चाहे ऐसे तोड़ो, दोनों में कितनी फोर्स लगे, सेम लगे, देन दैट इज कॉल्ड आइसोट्रॉपिक. दैट इज प्रॉपर्टीज आर इंडिपेंडेंट ऑफ डायरेक्शन आई चूज, but here it is dependent. So in this case I am taking a special case in which is independent. इसका मतलब क्या हुआ? अगर मैं इस डायरेक्शन में लगा रहा हूं लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, तो लेटरल स्ट्रेन दोनों डायरेक्शंस में सेम होगा, वो डिफरेंट नहीं होगा. आप मेरी समझ रहे हो बात? अगर y और z डायरेक्शन में कोई बायस होता और x डायरेक्शन में मैं फोर्स लगाता, तो y z डायरेक्शन में दोनों में डिफरेंट स्ट्रेन होता, तो आपके पास पॉइजन रेशियो सेम ना आती. हाँ जी, क्लियर है? एनी डाउट्स? सर. हाँ जी बताइए. सर तो एनिसोट्रॉपिक और एमॉर्फस सेम ही हो गए सर क्या, या फिर एनिसोट्रॉपिक क्रिस्टलाइन ही होता है सर? एन आइसोट्रॉपिक, सर एनाइसोट्रॉपिक से क्रिस्टलाइन ही स्ट्रक्चर होता है या फिर वो एमॉर्फस हो जाता है सर? नहीं वो डिपेंड करता है. देखो, इररेगुलरिटीज हो जाती हैं. क्रिस्टलाइन में भी ये हो सकता है कि किसी डायरेक्शन में उसका मैग्नीट्यूड कम हो, किसी में कम हो. ओके सर. तो जो आप कह रहे हो वो माइक्रोस्ट्रक्चर की बात कर रहे हो कि एमॉर्फस जो चीज है वो आप कह रहे हो कि एनाइसोट्रॉपिक होगी कि क्रिस्टलाइन होगी, यही कह रहे हो आप?
नहीं सर, मैं ये पूछ रहा हूँ सर कि क्या जो एनाइसोट्रॉपिक सर, अगर मान लो सर मैं कह रहा हूँ ये मटेरियल एनाइसोट्रॉपिक है सर, तो हाँ, बेसिकली क्या ये मैं ये कह सकता हूँ कि वो एमोर्फस भी है, मतलब हो सकता है क्या वो एमोर्फस भी हो इन केस वो एनाइसोट्रॉपिक है? बट यू कैन नॉट बी सो स्पेसिफिक कि दिस ओके इज सर, नॉट अ जनरल स्टेटमेंट कि अगर मॉर्फस है तो वो एनाइसोट्रॉपिक होगा कि नहीं होगा. यस सर, So it depends. So there is no isotropic material as such in reality. All तो materials have आइसोट्रॉपिक some सर anisotropic. आइडियल केस हो गया सर? हाँ जी, क्लियर है? क्या कह रहे हैं आप? सर तो आइसोट्रॉपिक सर आइडियल केस हो गया सर हमारा? Isotropic is an ideal case. So अगर कोई मटेरियल में anisotropic कम है, we can treat this as isotropic material. हाँ जी, क्लियर है? अब जैसे कास्ट आयरन है, इफ आई आस्क यू कास्ट आयरन, कास्ट आयरन आपने सुना है? कास्ट आयरन, Yes, sir. कास्ट आयरन किस में Yes, यूज sir. होता है? फाउंडेशन में? या आपको मैं ये पूछूं, वन लास्ट पॉइंट से, ऑल ऑफ यू हैव हर्ड अबाउट कंक्रीट. कंक्रीट पता है आपको? Yes, sir. जी sir. तो कंक्रीट की क्या होती है? अगर आपने कभी सीमेंट की ऐड देखी हो, सीमेंट की ऐड में क्या बोलते हैं? इतनी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ. Yes, sir. Yes, sir. तो व्हाट डज दैट मीन? इट हैज वेरी गुड प्रॉपर्टीज अंडर कंप्रेशन. तो आपको जो Yes. माइल्ड स्टील की बार्स डालनी पड़ती हैं, जिसको सरिया बोलते हो आप, वो क्यों डालनी पड़ती हैं लेंटर में? सर वो होल्ड कर सके ना सर? Transfers के लिए. उसको Transfers टेंसाइल force के स्ट्रेंथ लिए. देने के लिए. Yes. तो आपने कंपोजिट बना दिया कंक्रीट प्लस mild steel bars का. Mild steel bars will ensure it can sustain tensile load, and concrete will ensure it can bear compressive load. हाँ जी, क्लियर है? So this is what is meant by isotropic and isotropic. अगर उसकी compressive और tensile property same होती, then that would have been called as isotropic material. But these are not isotropic materials. All materials what you see in nature are essentially anisotropic. They have certain strengths in certain directions, as we also have strengths in certain direction, weakness in certain directions. We don't have all weaknesses, we don't have all strengths. So that is the way you can think about it. So I will break for today now. We will continue with this in the next lecture now. Yes. Okay, thank you. Thank you, sir. Okay. Thank you, sir. Okay.